गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। Let there be peace, let there be peace and love amongst all the human beings of the universe. Let there be peace. Om Shanti Shanti Shanti. Welcome to the afternoon meeting. We have did the contemplation till 17th chapter. Today we are starting the 18th chapter, that is the story of Veetahavya. All these stories are very enchanting stories inside the stories, and it gives the meaning of life. अपने जीवन का जगत का सच्चा रूप बताने वाली कहानियां, उसका नाम है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें भगवान वशिष्ठ ऋषि ने भगवान राम को उपदेश दिए, जिसमें राम 15 इयर्स के होने के बावजूद भगवान राम बन सके। So such stories we have seen till 17th chapter, 18th chapter we are starting. The first topic is Prana Spanda Nirodh, the control of the movement of the prana or the vital air. Vashishta Uvacha Athe mam aparam rama Shunu drushti padapramad Veetahavyo muni kashit Udvigno hi kriyakramat निर्विकल्प समार्थ्यर्थ सत्यज्य सकला क्रिया उपविश्यन्ते शुद्धे संजहार मनाशने. Meaning English, Rama, hear now this matchless knowledge which gives us the supreme position. रामा, ये नॉलेज जरा सुन जो अपने को जीवन में सुप्रीम पोजीशन दे सकता है. A certain sage called as Veetahavya, disgusted with the performance of the religious rites, having renounced all the rituals for the sake of nirvikalpa samadhi, that is absorption in absolute consciousness, slowly withdraw or restrain his mind, having sat down in a pure place. तो क्या हो गया, ये वीतहव्य जो थे एक बहुत बड़े पहुंचे हुए मुनि थे, खूब पूजा ध्यान तप तपस्या सब कुछ करते थे, पर फेडअप हो गए. इतना सब मैं कर रहा हूँ, शिव जी की भक्ति कर रहा हूँ, पेड़ के नीचे बैठे रहता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ, उपवास करता हूँ, सब हॉस्पिटलिटी करता हूँ, मौन रखता हूँ, सब सब अच्छा कर रहा हूँ, पर तो भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा. इसके लिए उसने डिसाइड किया कि अभी मुझे तो निर्विकल्प समाधि ही मिलाना है, एब्जॉर्प्शन इन एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस. एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस मुझे मिलाना ही है. इसलिए स्लोली उन्होंने विड्रॉ करना और रिस्ट्रेन, माइंड रिस्ट्रेन करना शुरू कर दिया, और एक अच्छी सी जगह पे जो शुद्ध पवित्र जगह है वहां बैठ गए. तो क्या किया उन्होंने, अगले श्लोक में बताते हैं. बाह्यन अभ्यंतराश्चैव स्पर्शान परिजहत क्रमात् तथा स्वमनसः स्थैर्ये कांक्षमानो विचिन्तयत्. Gradually he abandoned all contacts, external as well as internal. Then desiring the firmness or fixity of the mind, he reflected as follows. उन्होंने बाहर और अंदर का पूरा जो उनके कॉन्टेक्ट थे, बाहर के कॉन्टेक्ट वस्तु और व्यक्तियों से, वो छोड़ दिए, और अंदर में अपने मन चित्त अहंकार बुद्धि ये भी छोड़ दिया और शांत बैठे रहे. इसके बाद क्या हुआ, श्लोका नंबर 4, पेज नंबर 180. अहो नु चंचलम चित्तम प्रत्याहतमपि क्षणात् घटात् पटम उपयाति पटात् षटक मुत्कटम. Oh, the mind is indeed unsteady in a moment, even though withdrawn. Mind unsteady even though withdrawn. From the vessel, it approaches a garment. From the garment, it goes to spacious cart. That is, it jumps from one place to another place. तो क्या हो गया, वीतहव्य एक जगह पे बैठ गए और शांति से सब अनुलोम विलोम कर लिया, जब ध्यान पूजा सब कर लिया, शरीर शीतलीकरण कर लिया. उसके बाद देखते क्या है, तो मन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह से चौथी जगह, घटात पटो उपायाति पटात षटक मुत्कटम. इधर 100 बार इधर से उधर जंप मार रहा है माइंड. तो अभी ऐसी माइंड को कहाँ से शांत करें, अपन बैठ भी गए तो
तो आगे बताते हैं 5th नंबर, चित्तम अथेशवहो याति तदपेष्विव मर्कट अहम चेतनमित्येव चित्तम त्वं मनसे वृथा. Alas, the mind moves from objects to objects like a monkey moves from tree to tree. Mind you genuinely think I alone and sentient or conscious. तू फालतू की फालतू सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ. अत्यंत विभिन्नो ऐक्यम नास्ति चिन्मनो शठ अहंकाराताम जीवम इत्यप्ति तज्ज भावना. तो क्या भावना है? रोग. देयर इज नो आइडेंटिटी बिटवीन द कॉन्शियसनेस एंड माइंड which are completely different. Abandon even the idea that the I am the individual soul out of egotism. So what has to be dropped? Body consciousness has to be dropped. Jiva consciousness has to be dropped. Ishwar consciousness has to be dropped. So what remains is truth. What remains is consciousness. What remains is undivided and fragmented reality. What remains is the self. So that has to be seen by you. So how it will be seen? 7th number shloka. एतावदेव ते रूपम यावत् नास्ति विचारणम विचारेण्योपशांतम तमालोकेन तमो यथा. As long as there is no investigation, as long as there is a form for you, that is, you exist only so long there is no investigation of your nature. You are extinguished by investigation just as the darkness by light. आप एक्सटिंग्विश हो जाते हैं जैसे कि डार्कनेस जैसा लाइट आया वैसे एक्सटिंग्विश हो जाता है. वैसे ही आदमी का जो माइंड है वो भी एक्सटिंग्विश हो जाता है और देन इट स्टार्ट गेटिंग हैप्पीनेस. श्लोक नंबर 8. स्वात्मेवातिष्ठं तुर्यरूपपदे स्थितः अन्नेतीन्द्रियगण यूयं किं निरर्थकं माकुला. I shall abide in my own self, being established in the abode of the nature of Turiya. That is the fourth stage of consciousness. Alas, organs of sense, why are you agitated in vain? The organs of sense, तो आप क्यों agitate हो रहे हैं unnecessary के unnecessary? Don't get agitated because I am happy here. So the Turiya state, iti chittam samadhaya tasyo aspadriyendriya antareva shashamasya kramena prana santiti. Concentrating the mind thus, he remained without making his own sense throb or move. Gradually the flow of his prana or vital air just become calm or extinguished within. Prana starts getting stabilized. तथैव तिष्ठतस्य संवत्सरशतक्रम कायो हि वीतहव्यस्य पंक्तेनो virtale kruta. The body of that Vitala becoming just as for 300 years was indeed placed within the surface of the earth by means of mud. The body got mud, buried under the mud. So he was meditating. What he has dropped? He has dropped all the consciousness related to the relative world. He has dropped all the objectivity. He has even dropped his mind thought process. And what remains is only bliss sleep. That means Jivatma Bhava is Dehatma Bhava is dropped, Jivatma Bhava is dropped, Ishwaratma Bhava is dropped. What remains is only self. That has been said here. In the peaceful mind, only the contemplative thoughts are possible. If real spiritual practice is going, it is going beyond the mind and not fighting with the mind. So, learn from every experience of life in a positive way. We have to learn in a positive way, then only it will be helpful to us. Tat- Tattva cannot be told, we have to learn. It should click in a right way. So through stories we will get a right vision. Spiritual life is correcting our own vision. The spiritual life is correcting the vision, that is what is required. If vision is corrected, the perception is corrected. If perception is corrected, then the interaction is correct. And if the interaction is correct, the experiences will be correct. And if the experience is correct, there will be no regret in life. So if there is no regret in somebody's life, that means his experiences are correct. That means his vision is correct. That means he's on the right track. Perception is correct. तो perception कैसे correct होगा? ईश्वरी बुद्धि रखेंगे. So again we will see this. What is that? Vision has to be corrected. How the vision has to be corrected? Perception is correct. If perception is correct, then interaction will be correct. If the interaction is correct, what will happen is your experiences are correct. And if the experience of the life is correct, then what happens is there is no regret in the life, and that's what is said. In a peaceful mind, only the contemplative thoughts are possible. जिसका मन शांत है,
उसी में contemplative thoughts possible. And what is this contemplation? Inquiry कि who am I? मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर का ढांचा दिख रहा हूँ, ये मैं हूँ, या फिर मैं ये प्राण हूँ जिसके वजह से प्राण चल रहे हैं, यानी मैं देहात्म भाव हूँ, जीवात्म भाव हूँ, या मैं बहुत बड़ा ईश्वर हूँ, सब लोगों ने मुझे मानना चाहिए, वो ईश्वरात्मक भाव। तो देहात्म भाव भी ड्रॉप करना है, जीवात्म भाव भी ड्रॉप करना है, ईश्वरात्म भाव भी ड्रॉप करना है, और रहना कहाँ है? ब्लिस में रहना है, जैसे है उसी में रहना है। सो व्हाट इज द प्रेजेंट विजन? इज ड्यूअलिटी। प्रेजेंट विजन अपनी ड्यूअलिटी है। एंड whenever we something say see something other than us, then what happens is desire, anger and fear start coming. जैसे अपन अपने से भिन्न देखते हैं तो अपने को डिजायर, उसको प्राप्त करना है, एंगर आएगा, और इसके बाद फिर फियर आएगा. सो दिस थिंग्स कीप्स ऑन कमिंग. सो वी हैव टू सी दैट this gets diluted. How it is possible? Raga, Dvesha, Lobha, Moha, Mada, Matsar. These are all to be dropped. And that is possible only with the right contemplation. We have to have the right contemplation. Then we are, if we really are following duality, then we are far away from the truth. Although duality is pursued, there is no differentiation on account of duality, and that is a spiritual life. जगत में माँ पिताजी भाई बहन पति पत्नी सब रिलेशन सब उपाधियां दिखती है, पर कोई उसको सीरियसली नहीं लेता है. सीरियसली लेंगे तो सिर दुखेगा, उसने मेरे को ऐसा बोला तो 1994 में ऐसा बोला था, 2002 में ऐसा बोला, 2012 में ऐसा बोला, 2023 में ऐसा बोला, तो मैं ऐसा बोलने को या बोलने के लिए तैयार हूँ या है. सो दिस इज ऑफ नो यूज, बिकॉज अपन अपना ही मन खराब कर रहे हैं. किस चीज से? अपन अपने को ही मन में ड्यूलिटी ला रहे हैं. अपन भिन्न और वो लोग भिन्न ऐसी ला रहे, बट एक्चुअली वो एक ही है. तो अगर भिन्नता पकड़ोगे तो क्या होगा? तीन चीजें आएगी, डिजायर, एंगर एंड फियर. अपने को डिजायर आएगी, कोई चीज अपने को मिलना चाहिए, नहीं मिली तो एंगर आएगा, और मिली तो उसको बचा के रखने के लिए फियर आएगा. सो दिस थिंग ऑल विल कम इन द ड्यूलिटी. तो ड्यूलिटी ड्रॉप करना है. सो रनिंग आउटसाइड स्टॉप, वरिंग इनसाइड स्टॉप. बाहर भागना रुक गया, अंदर में वरी होना रुक गया. माइंड इज एट पीस एंड वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल. वर्ल्ड कब ब्यूटीफुल रहेगा? मन जब पीसफुल रहेगा तब वर्ल्ड ब्यूटीफुल रहेगा. दैट इज व्हाट इज बीन टोल्ड हियर. सो डिजायरलेस, एंगरलेस, फियरलेस एक्सपीरियंस इज अबाइडिंग इन ट्रूथ. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? अपने को डिजायर नहीं होना चाहिए, एंगर नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए. दैट इज abiding in the truth. So what we call in a simple words is be happy. मौज में रहो. हर क्षण, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर ये महीना, हर ईयर, हर कल्प तक मजे में रहो, मौज में रहो, बिकॉज भगवान डिसाइड. सो श्रुनु दृष्टम पद प्रदमम, a vision which will give up the ultimate realization. अपने को अल्टीमेट रियलाइजेशन होगा, वो विजन अपने को इम्पोर्टेंट है. So how to live in this life? Not like vulture attitude for name and fame. Vulture flies very high, but his always attention is on the dead bodies. So our attention should not be on the dead world. ये जगत तो मिथ्या है, इस पे क्या attention करना है? अपन खुश रहना है. So the duties which the ignorant person does, the same duty even the inspired or enlightened persons do, but the ignorant person suffer, whereas the enlightened person is always happy. So live in this world dynamically, not in a depressed mode, not in a frustration mode, but unattached. जगत से अपने को unattached रहना पड़ेगा. And be one with everyone. Demonstrate through actions. Life could be beautiful in some places, same place where we are living. Spiritual life is not becoming extraordinary. So in some situations you have to outwit all turmoil, politics, and true spiritual life is not becoming extraordinary. This is a vision, and for that purpose, the story of Veetahavya has been told. Some people feel, okay, we'll do karma, 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 and you can never attain fulfillment through karma. And you have to rise above karma. Karma always keeps you in a solid body level. So, when we do karma, we become expert, and then it start becoming mechanical. And what are the things becoming mechanical? That is very boring. So don't do the things mechanical. Every day there should be different tests. He thought now and should keep my mind absolutely cool. That is the Veetahavya so thought. So for attending Nirvikalpa Samadhi, he gave all the activities of life. Let the mind be at peace under all conditions.
sincerely and not with giving away the works. So, when nobody is watching you, nobody is controlling, you are all free from time. You you will know that where the mind is going. At that time, you will be in a position to read your mind. So, one has to work on the mind. Let me keep my mind cool. That has to be seen. So, what are the three types of jiva? Pratibhasik jiv, Vyavaharik jiv, and Paramarthik jiv. That we'll see it tomorrow with this prayers. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Shri Ramachandra Arpanamastu.